हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेसन नंबर 71। और आज हम बात करेंगे रीडिंग और वोकेबलरी के बारे में। स्टार्ट करते हैं। राजकुमार रॉय स्टाइलफुल स्टोरी। स्पोकन बाय राजकुमार रॉय, बॉलीवुड एक्टर हैं। ही वॉज ए प्रोफेशनल, हिज नेम इज मिस्टर एमिन। ही इज माई taekwondo coach, and I want only one who continued for almost 11 and 12 years. Everybody just quit, and I went on to win like some national gold medals and all. And then dance came into my life. I think somewhere through him, somewhere through my dance teacher in my school, I started enjoying doing this different thing. Apart from studies, also I started getting attention. You know, a lot of attention in school, and this guy dance well, and this guy is in martial arts, and then acting just happened in class 9th and 10th. Then after vocabulary first knot, a fastening made by looping and piece of string or rope, तार या रस्सी के टुकड़े को जोड़कर बनाया गया एक बंधन। सिमिलर वर्ड है तार या लूप। फर्स्ट vocabulary knot, तार या रस्सी के टुकड़े को जोड़कर बनाया गया एक बंधन। सेकेंड vocabulary pots is spoken of as the contents of money container. Batua, similar word a bag, a handbag. Pots, second vocabulary. Then after third, plus add a profit, plus similar word extra bonus. हिंदी मीनिंग लाभ। आपको पता चल गया होगा 3 वोकैबुलरी है और लेसन नंबर 71 कंप्लीट होता है। रीडिंग ग्रामर भी आपको पढ़ना पड़ेगा और स्पीकिंग। ओके, वोकैबुलरी रीडिंग। चलिए मिलते हैं लेसन नंबर 72 पे। और आप मेरे से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।